I am going to discuss about the Bohr's theory of hydrogen and hydrogen-like atom. Hydrogen means electron is one, huh? And hydrogen-like atom like helium plus. So in helium plus, here number of electron is one, but the atomic here number of electron is one, but atomic number Z is how much here? 2. For hydrogen how much? One electron, and here atomic number Z is equal to 1. Lithium double plus. For lithium double plus, you can say here also the number of electron is how much here? 1, but atomic number Z is equal to 3. So hydrogen and hydrogen like atom means like this one, in which the number of electron is remain 1. So remember this, but for hydrogen atomic number Z is equal to 1, and for helium plus even it is hydrogen like atom. But why hydrogen like atom? Because here the number of electron is also 1, but the atomic number is not 1. Atomic number is how much here? 2. For lithium double plus, it is also just like a hydrogen like atom, because there is also 1 electron, but the atomic number Z is how much here? 3. So here Bohr's theory for the hydrogen and hydrogen like atom. So a hydrogen like atom consists a tiny positively charged nucleus and an electron revolving around the nucleus in the stable orbit. तो here यहाँ पे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जैसे न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस परमिटेड ऑर्बिट या जिस स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, उस स्टेबल ऑर्बिट की रेडियस क्या क्या होगी. So let E, M and V be the charge, mass and velocity of an electron revolving around the nucleus in a stable orbit, in a permittable orbit or stable orbit of radius r. तो suppose the nucleus is what here? Plus Ze, और हमने क्या लिया? कोई इलेक्ट्रॉन E जो है वो किसी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करा जिसका रेडियस कितना है? r. यही है परमिटेड ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ व्हाट वेलोसिटी v. एंड यू नो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और हम ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसे क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हियर द कोलंबियन फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस and this electron. This will provide the necessary centripetal force. So you can say the necessary centripetal force mv square by r, that force is provided by the force, Coulombian force of attraction between this nucleus and this electron, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2. तो q1 is what here? Ze into E. याद रखिएगा यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगा, अपॉन r square. So in this way you can say mv square by r is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Ze into E upon r square. R you can say 1 r is cancelled by this r. So mv square is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Ze square by r. Suppose this is equation number 1. And from Bohr's first postulate, MVR means electron can revolve only in those orbit in which its angular momentum MVR is equal to NH upon 5. This one by Bohr's first postulate. तो ऑन स्क्वायरिंग द इक्वेशन 2 एंड डिवाइडेड बाय 1, इस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ और इसको इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे. तो व्हाट यू विल गेट ऑन स्क्वायरिंग द इक्वेशन 2 एंड डिवाइडेड बाय 1. So squaring the equation 2, so when you will take the square of the equation 2, so you will square both sides. Here you will get m square v square r square is equal to n square h square upon 4 pi square. This one m square v square r square is equal to n square h square upon 4 pi square. So squaring the equation 2 and dividing by equation 1. Equation 1 is this one. So इसका स्क्वायर करके equation 2 का और equation 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा अपॉन mv स्क्वायर और यहाँ अपॉन
1 upon 4 pi epsilon naught, and this one is ZE square by R in this way. So now you can see here V square is cancelled by V square. 1m is cancelled by 1m. And finally, you will get here m r square. 1m we left here because 1m is cancelled, 1m is left. So m here r square is equal to n square h square upon 4 pi square into whole this term will comes in numerator here. So 4 pi epsilon naught r upon z e square. Now you see here 4 is cancelled by 4. 1 pi is cancelled by 1 pi. 1 pi is left here. So from here and here also r, here r square. So 1 r is also cancelled by this r, here r is left. So you can see here m into r is equal to n square h square, here epsilon naught upon, here 1 pi is left, upon pi z e square. So this one is mr is equal to this one. Then r is equal to, so how can you say here r is equal to, what you can write here, n square h square epsilon naught upon pi ये m यहाँ आ गया, pi m z e square. So in this way you can find the radius of that permitted orbit around the हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व. अब देखिए यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, atomic number of that nucleus hydrogen or hydrogen like atom Z is constant, and charge on the electron is constant. It means from here you can see R is directly proportional to n square. Since n is equal to 1, 2, 3, 4, this one is what here? Principal quantum number of this orbit. So, when you will take n is equal to 1, 2, 3 means principal quantum number of that orbit. So, the radii of the permitted orbit in which the electrons can revolve, that will be increases in the ratio of, अब देखिए r is directly proportional to n square. So for first orbit n is equal to 1, so r is directly proportional to 1. For second orbit you will take 2 square means 4. For third orbit 9. इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड परमिटेड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का 4 गुना होगा. अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस 2 है तो सेकेंड परमिटेड ऑर्बिट की रेडियस उसका 4 गुना होगा, मतलब 8 होगा. थर्ड रेडियस, थर्ड का क्या होगा, उसका 9 टाइम्स होगा. इसका मतलब द रेशियो ऑफ दिस परमिटेड ऑर्बिट इंक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ 1, 4, 9, 16 लाइक दिस वन हियर. लेकिन ये मत समझिएगा यहाँ पे कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज 1. नहीं, ये रेशियो बता रहा है कि इस रेशियो में परमिटेड ऑर्बिट की रेडियस क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी. जैसे हम कह दें कि मान लीजिए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम दे दिया किसी में और कह दिया कि उसके पहले ऑर्बिट की रेडियस है x, तो उसके थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी. तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पहले की तुलना में कितना टाइम्स होगा, 9 टाइम्स. इसका मतलब वो 9x हो जाएगा. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेडियाई ऑफ एनी परमिटेड ऑर्बिट. So next one is Bohr's radius. Bohr's radius, Bohr's is what here? Bohr's is given for the hydrogen atom. So Bohr's radius means the radius of first orbit of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उसी को कहेंगे बोर्स रेडियस. तो पहले ऑर्बिट का मतलब n इज इक्वल टू 1, और चूंकि हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा z इज इक्वल टू 1. तो इसी फॉर्मूले में n की जगह पे 1 रख दें और z की जगह पे 1 रख दें. सो इन दिस वे यू विल गेट व्हाट हियर, radii of the first permitted orbit for the hydrogen atom. And when you will put the here n is equal to 1 and z is equal to 1, then the radii of the first orbit of the hydrogen atom will comes r1 is equal to h square epsilon naught upon pi m e square, क्योंकि z की जगह पे 1 हो गया, n की जगह पे 1 हो गया.
एंड दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। इसी को क्या कहते हैं, बोर्स रेडियस। सिंस ये सब कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू रख करके जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट इट्स वैल्यू इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब बोर्स रेडियस की वैल्यू कितनी आई, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की रेडियस है। तो व्हाट विल बी द रेडियाई ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, सेकंड परमिटेड ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन? तो देखिए r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो सेकंड के लिए रखेंगे तो यहां 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसका मतलब द रेडियाई ऑफ सेकंड परमिटेड ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 4 टाइम्स ऑफ दिस। क्योंकि इसके में 1:4 होना चाहिए, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट का रेडियस पहले का 4 गुना है। तो पहले ऑर्बिट का रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसका मतलब ये हो जाएगा 0.4 into 0.53 एंगस्ट्रॉम। दिस वन इज व्हाट हियर, रेडियाई ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। थर्ड ऑर्बिट का रेडियाई क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट का निकालने के लिए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9 into 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेडियाई ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछे कि व्हाट विल बी द रेडियाई ऑफ फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट फॉर हीलियम प्लस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसके लिए भी रेडियस निकालने का यही फार्मूला। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस करेंगे तो n की जगह पे तो 1 रखिएगा, और चूंकि ये हीलियम है तो वहां पे z की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। एंड इन दिस वे फर्स्ट यू विल कैलकुलेट व्हाट इज द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस एटम। और उसके सेकंड ऑर्बिट का पूछा जाए तो सेकंड ऑर्बिट का क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, मतलब जो पहले ऑर्बिट का रेडियाई मिला है उसका 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट का उसका 9 टाइम्स। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेडियाई ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन और द हाइड्रोजन लाइक एटम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इट मींस the radii of the permitted orbit is increases in the square of their principal quantum number। जो permitted orbit की रेडियस होती है वो क्या होती रहती है, स्क्वायर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के टर्म में क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। नाउ सेकंड वन इज व्हाट हियर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द परमिटेड ऑर्बिट। न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस परमिटेड ऑर्बिट में, जिस स्टेबल मींस परमिटेड ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनमें वेलोसिटी क्या होती है। तो यू कैन फाइंड आउट, first all of you learn this formula, radii is n square h square epsilon naught upon pi mze square, or you can say r is directly proportional to n square. For finding the velocity of the electron in the permitted orbit, so according to the Bohr's first postulate, we know mvr is equal to nh upon 2 pi. This one. So from here v is equal to velocity of the electron and h upon 2 pi, and this one is m into r, this one. And from here already have derived here the value of r is how much, n square h square epsilon naught upon pi mze square. So you put the value of r, this value of r here. So what you will get, this is equal to nh upon 2 pi m, and at place of r write down n square h square epsilon naught upon pi m z square. So from you see here, pi is cancelled by pi, m is cancelled by m, 1 n is cancelled by 1 and 1 is left, 1 h is cancelled by 1 h, this one is left here, 1 h. So from here you can say v is equal to, now you see here, what is left here, ze square, here ze square upon 2 n h epsilon naught, 2, 1 n is left here and 1 h is left here, h and epsilon naught. So in this you can say velocity of the electron in the permitted orbit is given by ze square upon 2 n h epsilon naught. अब यहां पे देखिए वेरिएबल क्या है, बदल क्या रहा है लगातार, जेड तो वही रहेगा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जैसा मैंने बताया, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, 2 वही रहेगा,
बदलेगा केवल n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 1, for second n is equal to 2, for third orbit n is equal to 3. It means here n is variable, so you can write here this is equal to z e square upon 2h epsilon naught 1 upon n है वही चीज, यही चीज मैं फिर से लिखा हूं, बट फ्रॉम हियर यू कैन से v, चूंकि ये सब चीज कांस्टेंट हो जाएगी, और फ्रॉम हियर यू कैन से v is inversely proportional to n. It means velocity of the electron is inversely proportional to the principal quantum number. इसका मतलब n की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी. तो इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे सेकंड ऑर्बिट में लेंगे तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में और घट जाएगी. तो इन दिस वे the velocity of the electron in all these permitted orbit are not same. इन सब permitted orbit में या इन सब stable orbit में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सब सेम वेलोसिटी से रिवॉल्व नहीं करते हैं. जो पहले ऑर्बिट में रहता है इलेक्ट्रॉन वो सबसे तेज रिवॉल्व करता होगा, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट वाला उससे धीमे, थर्ड ऑर्बिट वाला उससे धीमे. सो इन दिस वे बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. If you want to calculate the velocity of the electron in the first orbit of hydrogen atom, अगर हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे z की जगह पे 1 ले लेंगे और n की जगह पे 1 ले लेंगे. Then you will get v is equal to e square upon 2h epsilon naught. v e square upon 2h epsilon naught. तो वो जो वेलोसिटी आएगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन. एंड व्हेन यू विल कंपेयर इट विद द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसको अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करें तो हमको एक प्योर नंबर मिलेगा जो वैल्यू आती है नियरली 1/137. ये एक प्योर नंबर आया, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड व्हाट हियर, find structure constant, and which is denoted by the alpha. Now the energy of the electron in the stationary orbit or energy of the electron in the stable orbit. जिस स्टेबल या स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसमें उसकी एनर्जी कितनी होगी. तब देखिए क्योंकि इसके पास वेलोसिटी भी है तो वेलोसिटी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, as well as it revolve around the nucleus. So there will be also the electrostatic potential energy, and the total energy of the electron is equal to the sum of its kinetic energy as well as its electrostatic potential energy. तो kinetic energy इसके पास कितनी हो जाएगी, K is equal to half mv square as you know. And from equation 1 याद करिए, equation 1 हमने क्या दिया था, mv square is equal to ze square upon 4 pi epsilon naught r. ये था mv square is equal to ze square upon 4 pi epsilon naught r. ये इक्वेशन नंबर 1 जब हम रेडियाई के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि ये आएगा जिसमें कहते थे mv square by r is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. तो फ्रॉम देयर mv square is equal to jd square upon 4 pi epsilon naught r. तो यही वैल्यू mv square की यहां लाके रखते हैं. तो kinetic energy of that electron which is revolving in that stationary orbit is given by 1/2 into ze square upon 4 pi epsilon naught r. तो ये आ जाएगा ze square upon 4 to 8 pi epsilon naught r. This is the what here, kinetic energy of that electron which is revolving around the nucleus in the stable orbit or stationary orbit. And what is the electrostatic potential energy between the electron and nucleus? So electrostatic potential energy U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2. Q1 means charge on the nucleus into q2.
Q2 is what? Charge on the electron. So here minus E upon distance between them is how much here? R. अब ये क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ माइनस क्यों ले लिए हैं? इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी हम निकालें। एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा चार्ज के साइन को कंसीडर करेंगे, और जब भी वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे चार्ज के साइन को कंसीडर किया गया है। तो दिस विल कम व्हाट हियर माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. So this one is the electrostatic potential energy between the electron and the nucleus R, electron which is revolving in that stationary orbit. So kinetic energy is this one, potential energy is this one. So the total energy of the electron, how can you find? By taking the sum of their kinetic energy and potential energy. So the total energy of the electron E is equal to its kinetic energy plus potential energy, and now you put the value of the kinetic energy and potential energy, add these two. So this plus minus this one is this one. Now you take what is common here, ZE square, take ZE square common upon 4 pi epsilon naught R also you can take common. Here you will get 1 by 2, क्योंकि यहाँ 8 है, minus 1, and 1 by 2 minus 1 means you will get here minus 1 by 2. So you will get here this is equal to ZE square upon 4 pi epsilon naught R into minus 1 upon 2. In this way, ZE square upon 4 pi epsilon naught R into 1 by 2 minus 1 means minus 1 by 2. And finally you can say the total kinetic total energy of that electron is given by E is equal to, this one is minus ZE square upon minus ZE square upon 4 to the 8 pi epsilon naught R. 8 pi epsilon naught R. But you know R is equal to what? Now you put the value of R. Since R is equal to n square h square epsilon naught upon pi mze square, तो वही R की वैल्यू यहाँ रख दे, तो रखो E is equal to minus ZE square upon 8 pi epsilon naught at place of R n square h square epsilon naught upon pi m ZE square. यहाँ लिख लीजिए since R is equal to n square h square epsilon naught upon pi m ZE square. And now you see here pi is cancelled by pi, pi को pi से कैंसिल कर दें, कुछ और कैंसिल होगा नहीं. Now you will take ZE square mZE square here, so E becomes E is equal to minus this m take here m ZE square, एक तो ऑलरेडी यहाँ है और ये भी इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा m Z square e to the power 4 upon 8 epsilon into epsilon naught square n square h square n square h square. So in this, so the energy of the electron in the permitted orbit is given by minus m z square e to the power 4 upon 8 epsilon naught square n square h square. And when you will take n is equal to 1, अगर हम n is equal to 1 ले लें, तो you will get the energy of the electron in the first stationary orbit or first stable orbit. n की जगह पे 2 ले लेंगे, तो energy of the electron in the second orbit. In this way, you can find out the energy of the electron in any stationary or stable orbit around the nucleus. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ZE 8 epsilon naught square h square ये सब कांस्टेंट है, बदलेगा क्या केवल द वैल्यू ऑफ n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस n इक्वल टू 1 2 3 फॉर द प्रिंसिपल different orbits here. So in this way, please once all of you go through this derivation what I have given today in this video here,
देखने में आपको थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन when you will do the practice 1 or 2 times, then it becomes very easy because already I have studied this one in the class level. So please, once all of you go through this one, and in the next video, then again I will give you how can you find the expression in the terms of the Rydberg constant.